very happy evening to one and all. Welcome to all of you on this live session on World Art Day. I would like to begin by congratulating everybody and wishing everybody a very happy World Art Day. Art has found a different meaning in our lives over the last 2 years. It has always been a source of entertainment, a source of expression, but over the last 2 years, we've realized that art is the source of our living. Everything we do, we express, how we express, different ways of expression, art has given us that vent. Celebrating World Art Day today, we wanted to connect with all our educators and talk to them about art, different forms of it, its importance, and why is it so necessary to make it a curriculum, a part of our curriculum in schools. It's important children begin studying art, learning about it at an early stage so that they can cope with every stress of life as they move on. To talk on this topic, we have with us Mr. Anurag Gupta, who's a CBSE empaneled master trainer and facilitator. He has a long work experience in the corporate sector, having a bachelor's and master's in engineering and having worked overseas for more than 5 years. After working in the engineering sector with different corporates at senior positions, he decided that he needed to do something in the field of education, and that too particularly with elementary education. So he quit his job and he started a school in his hometown, Gwalior. Ever since, he's been taking care of the school named Vidya Niket. And in the meantime, his love for education got him to do Bachelor's of Education from the University in Gwalior. After running a school, he also provides consultation for CBSE. He's a CBSE consultant. He's an educational consultant to other reputed organizations, educational institutions across the country. And like I mentioned before, he's also CBSE master trainer and facilitator. So without further ado, I would like to invite Anurag sir, who not only trains teachers, but is also instrumental in training parents, principals, leaders, school leaders, and school establishments in leading a very healthy relationship with the students and getting the positive results from teaching and learning transactions. Welcome, Anurag sir. Welcome to this platform. Thank you, Imani ma'am. Thanks for giving me this opportunity to connect with you and respected audience, which we'll be getting today. I hope I'm audible enough and visible, right? Yes, so you're perfectly audible and visible. And now over to you. I'll take your leave for the moment. Thank you so much. So to everyone present here, Mera Namaskar, Jai Hind. My name is Anurag Gupta. And I've been asked to speak on art integrated education, because that's the most happening thing. That if we go with NEP 2020, art education, art integrated education is the key for the future of education in India. मैं एक चीज कहना चाहूंगा, because ये audience मैंने हिमानी मैम से already permission ली थी कि I would like to speak both in Hindi and English. The reason behind that is because this is not a language dependent topic. Art is not language dependent, so I will be talking in Hindi and English both, so that I can connect to the maximum audience. Art को थोड़ा सा हमको यहाँ पे we need to just understand the basic difference between art education and art integrated education. क्योंकि कभी-कभी हम लोग क्या समझते हैं कि art by implementing art in the subjects, उसको हम confuse कर जाते हैं art and crafts. So I want to make one thing very clear, that art and craft or art education is a different story altogether. Art integrated education is absolutely different from art education. So here, what I will be discussing in next, say 30 minutes, I've asked Himani ma'am that if there are some questions also, specific questions related to subjects, because I am not an art teacher, I am not an art expert. I want to tell something about how to integrate art in your teaching learning process. So I am not that, I'm not a subject expert in this, but yes, I can give you certain tips, certain ideas, certain points to think upon
that you can implement in your classroom. मैं जानता हूं कि जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, I don't have the exact number, Himani must be having the number. आप सब अपने अपने सब्जेक्ट्स में, अपने अपने टीचिंग मेथड्स में एक्सपर्ट्स हैं और मुझसे कहीं ज़्यादा ज्ञानी हैं. थोड़े बहुत इंस्टेंसेस मैं आपके साथ शेयर करूंगा because I've been talking to a lot of teachers and principals across India and abroad on a regular basis because I take a number of workshops with principals and teachers. तो जो मैं सुनता हूँ, जो मेरे वर्कशॉप्स में लोग शेयर करते हैं, I would like to share some certain things with you. सबसे पहली बात, मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है मेरे पास just to keep that all the I mean जैसे that just not to let me digress from my topic, so I have made a small presentation about art integrated learning. सबसे एक बहुत ही important point comes in the mind of everyone, those who are not well versed with art and the art techniques. एक हिच हर किसी के दिमाग में आता है कि how we will implement art in our subjects. For example, if a mathematics teacher is concerned, or a Hindi teacher is concerned, or English teacher is concerned, सबके दिमाग में एक बड़ा खौफ सा होता है कि आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग की हम लोग बात तो बहुत कर रहे हैं, इसको इम्प्लीमेंट हम कैसे करेंगे, बिकॉज आर्ट हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट अच्छा नहीं है, हमारी ड्राइंग अच्छी नहीं है. तो वेरी इंपॉर्टेंट is to clear your understanding. Art integrated learning, art and craft नहीं. आर्ट कई तरीके की हो सकती है जिसको आप अपने क्लासरूम में इंप्लीमेंट कर सकते हैं. मैं एक प्रेजेंटेशन अभी शेयर करता हूं, उससे थोड़ा सा लाइन मिलेगा, देन आई डिस्कस स्लाइड बाय स्लाइड कि मेरा कहने का मतलब क्या है. वी विल बी डिस्कसिंग सर्टेन पॉइंट्स आल्सो वेयर वी विल बी taking what is art integrated education, how will we make assessments, and how we will connect the subject, the topic with art. Very important. पहली बात. दूसरी बात, एक चीज और that creates a doubt in the minds of the people, specifically teachers, कि how can we teach throughout the year by art integration? So my answer to this question, everyone, we'll discuss that. You cannot. And if anybody says that you can, he or she is lying. You need to identify certain topics, month-wise, week-wise, fortnightly, half-yearly, quarterly. That depends on you and the system that you work in. You need to make a list of certain topics, and then you need to implement that. The first thing I would say to everyone, you don't know me. None of us, I mean, none of you, except few people, knows me. Still, we are here, and I'm trying to connect with you, and you're trying to connect with me for next, say, 35-40 minutes. और वो मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं क्या बोलता हूँ. या तो मैं अच्छा बोलूंगा तो आप कनेक्ट होंगे, या मैं अच्छा नहीं बोलूंगा तो आपको लगेगा कि यू आर वेस्टेड योर 30-40-50 मिनट्स. तो मेरा भी समय खराब होगा और आपका भी समय खराब होगा. The first thing that you need to understand in the teaching learning process, a person will only listen to you if the person is interested in you. If I'm interested in you, I will listen to you. If your student is interested in you, he or she will listen to you. So how to make or how to create that interest, that's very important. मेरे दिमाग से या मेरे आपके क्लासरूम टीचर के दिमाग से एक स्टूडेंट के दिमाग में जब तक एक ब्रिज नहीं बनेगा, एक रेपो क्रिएट नहीं होगी, एक इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा, so there will be no transformation, or there will be no transmission, there will be no transmission of ideas from one mind to the other mind. तो वो जो ब्रिज बनाने का जो सिलसिला है, उसके लिए हम ये सारी टेक्निक्स को यूज करते हैं. आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग है और अदर जो हम चीजें हम लोग यूज करते हैं, ये एक तरीका है आपके
और आपकी ऑडियंस के बीच में एक ब्रिज डेवलप करने का, so that there is a flawless, without any hindrance, flow of thoughts. Because if the person is not interested in the subject or in the topic, or forget the topic, forget the subject, if the person is not interested in listening to you, regardless how good you are as a teacher, regardless how good subject expert you may be, but you will be failed, or you'll be failing as a teacher. क्योंकि जो आप बताना चाह रहे हैं वो ग्रहण ही नहीं करेगा सामने। तो थोड़ा सा मैं अब टॉपिक पे वापस आता हूँ. लेट मी शेयर one presentation with each one of you to give you an idea about what we consider or what we mean by art integrated education, and number two, how we can do that in the classroom. I will be telling you some basic examples जो आपको एक दिशा देंगे सोचने की. अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आपको कुछ ऐसा संजीवनी दे दूंगा जिससे बिल्कुल आप आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन के एक्सपर्ट बन जाएंगे, मैं नहीं दे सकता. But yes, I'll try my best to give you some food for thought, so that when you close your eyes and you sit for 2 minutes, you can come up with X number of ideas and you can implement in your classroom. It all depends on you. कोई बाइबल, गीता, कुरान नहीं है किसी के पास कि ये करिए और ये मत करिए. जो आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रिसोर्सेज जो आपके पास हैं उसके हिसाब से आप कर सकते हैं. बच्चों की कैपेसिटी क्या है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं. फाइनेंशियल वायबिलिटी क्या है उन चीजों की, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं. तो आप उन चीजों को करिए. सो लेट मी स्टार्ट माय स्क्रीन, शेयर माय स्क्रीन. जस्ट गिव मी अ मिनट. I think my screen is visible. Yes, yes, sir. Just give me a minute. When you are In the meanwhile, I've seen in the chat box, there are some very good responses that we are getting, and people are showing a lot of interest. And someone has also written that it is the need of the hour. Art integration and art education is the need of the hour, and it's something that we need to understand. Like you said, art and craft and art integrated education, they're two completely different concepts. correct. So the screen is full, the slide is full screen. Just give me a minute. Just give me a minute. ये थोड़ा सा okay. When we talk about art integrated learning, जिसको हम nutshell में अगर कहें, a pedagogy where art becomes the basis of teaching learning process, an opportunity for students to experience visual as well as performing arts to build his or her understanding of different concepts and subjects, and obviously experiential learning, holistic and joyful and experiential learning. When we talk about NEP 2020, there is a lot of emphasis is on experiential learning. कैसे आप करते करते सीखेंगे, उसके लिए we need to implement anything that makes your topic interesting. हम यहाँ इसको आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग कह रहे हैं. मैं अगर एक लेमन लैंग्वेज में बात करूं, कुछ भी चीज ऐसा करिए अपने क्लासरूम में जिससे you are able to connect with your students. Number one, you have the longest attention span of your students. Number two, and number three, which is very important, is you get the desired outcomes. उसके लिए आपको क्या करना है वो करिए. और आर्ट बहुत आसान
बड़ा इंटरेस्टिंग जरिया है आपकी गोल्स को अचीव करने। What is art integration? That encourages a culturally relevant student-centered curriculum that authentically engages students and allows them to apply content learned to their own lives in a relevant manner. मैं एक चीज फिर से कहूंगा, आर्ट इंटीग्रेशन करना जरूरी है, और उससे भी ज्यादा जरूरी है उन टॉपिक्स को चूज करना where you will be implementing art integrated learning. Because the system that we work in India, I hate saying that, but in 99% of the workshops when we take or we attend and we have speakers all over the country, and वो सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि साहब फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, आयरलैंड का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, और ना जाने कहाँ कहाँ का बहुत अच्छा है। मेरा एक सवाल होता है, 140 करोड़ पॉपुलेशन वाली कंट्री जिसमें 15 से 16 से 17 करोड़ बच्चे स्कूल जाते हैं, वहां पे आप फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम कैसे इंप्लीमेंट कर पाएंगे? बिकॉज द टेक्निक्स दैट you talk about requires a teacher student ratio of 1:10, sometimes 1:5. But in India, technically speaking, the student teacher ratio teacher student ratio is almost 1:50. So almost 3 to 4 to 5 times हमारे पास population है class में. तो हम blindly we cannot follow what West is doing. I have a firm belief that the system that we follow may not be the best, but it's beautiful because we are able to deliver results. तो पूरी 365 दिन में से if you have say 180 days working days, in those 180 working days, if you have 150 days when you have your class, okay, when you have your class, then out of those 150 exact class days, you cannot have art integrated learning throughout those 150 days. You have to choose certain topics. So the first thing that you need to do is you need to make a list of the topics that you want to teach through art. So now what is art integration? Is an approach to teaching in which students construct and demonstrate understanding through an art form. It may be a different, you have different numbers, or you have more than one numbers of art forms. You have numerous art forms which you can use depending on the topic and depending on the subject. But very important is your planning, because planning नहीं होगी तो ये art integrated learning जो है वो मजाक बन के रह जाएगा, क्योंकि आपके पास समय नहीं है. आपके पास वही 40 मिनट है अपनी क्लास में जाके, और आप उसको 40 मिनट में आपको कोई ना कोई एक्टिविटी ऐसी करानी है जिसमें 40 के 40 मिनट यूटिलाइज हो जाएं. आप वहां जाके सोच नहीं सकते क्योंकि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपका सिस्टम आपको अलाउ नहीं करता. So students engage in a creative process which connects an art form and other subjects and meets evolving objects in both. Ultimate aim art integrated learning का क्या है? Whatever subject that you are teaching, whatever topic you are teaching, ultimate aim of education or the classroom teaching or the session that you're taking is जो आपका फाइनल आउटकम है, जो आपको समझाना है, वो समझ में आना चाहिए. That is your final objective. So if you consider this Venn diagram, that is art as a curriculum, art enhanced curriculum and arts integrated curriculum. हम जो लोग जो बात कर रहे हैं वो है art integrated curriculum. ये सारी बातें अगर आप देखते हैं, art integration requires students creativity which builds 21st century skills. 21st century skills की बात हम लोग बहुत कर रहे हैं आजकल. हर वर्कशॉप में 21st century skills आते हैं. तो इसमें कम्युनिकेशन है, कोलैबोरेशन है, क्रिएटिविटी है, क्रिटिकल थिंकिंग है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. बट मेरी नजर में 21st सेंचुरी स्किल्स जो इस वक्त जरूरी है इन सब चीजों से ज्यादा,
वो है इमोशनल स्किल्स एंड सोशल स्किल्स, जो सबसे ज्यादा लैक हो रही हैं, और उसमें आर्ट इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। क्योंकि अगर आपको लगता है, इफ यू थिंक दैट यू टीचिंग देम अ सब्जेक्ट, इफ यू थिंक दैट यू टीचिंग देम अ टॉपिक, इफ यू थिंक यू टीचिंग देम मैथमेटिक्स, इफ यू थिंक यू टीचिंग देम साइंस, then you are wrong, my friend. You're not teaching them anything. You're just uh, guiding them. But yes, through art integration, you can teach them how to become a human. वो आप सिखाएंगे उनको। सब्जेक्ट 2 साल में ऐसे मानी ने कहा कि बहुत सारी चीजें बदल गई, और 100% बदल गई। बच्चे अपने आप सीख रहे हैं चीजों को, बच्चे अपने आप सीख रहे हैं कंसेप्ट्स को, बच्चे अपने आप सीख रहे हैं टॉपिक्स को, बच्चे अपने आप सीख रहे हैं सब्जेक्ट्स को। कहाँ लैक हो रहा है? इमोशनल स्किल्स में। कहाँ लैक हो रहा है? सोशल स्किल्स में। वो कोई नहीं सिखा सकता, वो कोई यूट्यूब, वो कोई लैपटॉप, वो कोई ऑनलाइन क्लास वो नहीं सिखा सकता। वो सीखा जाएगा पर्सनल इंटरेक्शन से, और उसमें आर्ट बहुत ज्यादा रोल प्ले करेगा। सो इफ यू टॉक अबाउट व्हाई आर्ट इंटीग्रेशन इज वैल्यूएबल, ये तो है ही, जो मैंने आपको पहले कहा, सबसे पहली चीज जो थी, टू क्रिएट इंटरेस्ट। टू क्रिएट इंटरेस्ट, एक चीज हमारे में आएगी, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस और व्हाट वी कॉल डिफरेंशिएटेड लर्निंग। ये आगे जाके एक चीज आएगी। मैं नटशेल में अगर आपको सारी बातें बताऊं तो आर्ट इंटीग्रेटेड learning is valuable because it develops the interest of the child in the topic taught. Because sometimes when you are using a conventional method of teaching, what happens is that interest goes away, the attention span is less, the concentration of the child is less. तब हम लोग कहते हैं कि बच्चे क्लास में नोटोरियस हैं, बच्चे क्लास में काम नहीं कर रहे, बच्चे जवाब नहीं दे रहे, बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द टॉपिक। वहां पे हम लोग यूज करेंगे आर्ट इंटीग्रेशन टू मेक सर्टेन टॉपिक्स वेरी इंटरेस्टिंग। अगर मैं आर्ट इंटीग्रेटेड डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूं, सो यू इफ यू हैव अ क्लास एंड एवरीबडी हैज डिफरेंट नीड्स, एवरीबडी कम्स फ्रॉम डिफरेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड्स। किसी के माँ बाप ज्यादा पढ़े हैं, किसी के माँ बाप कम पढ़े हैं, कोई लिटरेट फैमिली से आता है, कोई फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स है। देखिए, हिंदुस्तान में मैं एक छोटे एरिया को रिप्रेजेंट करता हूँ। आई रिप्रेजेंट अ वेरी स्मॉल टाउन। आई मीन, आई वुड से नॉट स्मॉल टाउन, बट इट्स अ बी टियर और सी टियर सिटी इन इंडिया, ग्वालियर। एंड I can see when I meet parents on a daily basis, they want their child to speak in English properly. They want their child to be well mannered because they have not studied themselves in good schools, or they didn't have money when they were kids. Their parents did not have money to give them good education, and they want to give their children good education. But the kind of background they have in their houses, at their homes, is still the same. वो प्लेटफॉर्म वहां पे भी नहीं मिल रहा है। तब क्या होता है, सारा जो ओनस आता है, दैट कम्स ऑन द स्कूल, बिकॉज दो 6 hours which you are which this child is spending in your school, उनके लिए वो ही समय है, क्योंकि they are paying for it and they have high expectations. तो वहां पे आ जाती है चीजें, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उनको सब्जेक्ट बच्चों को आता है कि नहीं आता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि टॉपिक क्या है, क्या आता है नहीं। उनको 2 चीज नजर आती हैं। एक तो वो बंदा इंसान बन जाए, चलना बोलना पढ़ना लिखना कैरी करना सीख जाए, एक पर्सनैलिटी उसकी डेवलप हो जाए, और दूसरा अंग्रेजी बोलना सीख जाए। ये एक बड़ा बेसिक सी नीड है, लेकिन हर स्कूल में, हर क्लास में, हर पेरेंट की ये 2 नीड्स होती हैं। ये एक बेसिक कॉमन नीड है बिना पढ़े लिखे माँ बाप की। और जो लोग पढ़े लिखे हैं, जिनकी लिटरेसी लेवल हाई है, वो तो ऑब्वियसली चाहते हैं कि बच्चे जो हैं वो उनके अच्छा करें। So when you have class with different needs, with different education background, with different attention span, with different language ability, चलिए अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया की तो इतना दिक्कत नहीं है, but when you have a mix of people, if you talk about a school in South India or East India or somewhere नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे तो वहाँ लैंग्वेज भी एबिलिटीज होंगी,
एंड यू हैव डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड ऑल्सो, वहां पे आपको किसी टॉपिक को सबको पढ़ाने के लिए वेरी इजी मेथड इज टू यूज आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग. So when we talk about interdisciplinary approach in AIL, that is basically while designing the activities, you need to concept difference across different subjects should be addressed. For example, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. I was taking a workshop for social science, and everyone has a problem that when the students are taught history, the class is very boring and they don't want to study history. तो उसमें एक टीचर थे फ्रॉम इंदौर, वन ऑफ द स्कूल्स इन इंदौर, आई डोंट रिमेम्बर द नेम बट यस. तो उन्होंने कहा कि सर मैंने क्या किया कि मैंने जो पूरी 9th और 10th की जो हिस्ट्री है, एक पेपर रोल इतना बड़ा लिया, 1 फीट का रोल करके उसमें पूरी हिस्ट्री को मैंने चैप्टर बाय चैप्टर पॉइंट्स में लिख दिया, और करीब वो ऑलमोस्ट लाइक 3 या 4 मीटर लंबा कागज है, और मैं बच्चों के साथ खोलता हुआ उसको आगे जाता हूँ क्लास में, और बच्चों ने बनाया है और उसको बनाने में इतने खुश हुए, और वो सारे जो डेट्स हैं, कंसेप्ट्स हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स हैं हिस्ट्री के, वो उनको याद हो गए. तो उस एक्टिविटी से 2 चीजें हुई. एक तो जो हिस्ट्री का जो पार्ट है, सोशल साइंस का जो पार्ट है, दैट वाज डन वेरी इजीली, और दूसरा जो आप टीम लर्निंग की जो बात करते हैं, देखिए हिंदुस्तान में सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है, हम लोग बचपन से ही अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि वी नीड टू बी नंबर 1 बिकॉज आवर सिस्टम इज लाइक दैट. उससे आगे आना है, इससे आगे आना है, इसके आगे जाना है, उसके आगे जाना है. टीम प्लेइंग की कोई एक्टिविटी हम लोग नहीं करते हैं, और जब बच्चा नौकरी में जाता है तब उसे समझ में आता है कि भाई आई नीड टू वर्क इन ए टीम, बिकॉज अकेला तो कोई काम ही नहीं करता. तो उसे लगता है मेरी जिंदगी भर की जो मेरी एजुकेशन थी वो पानी में चली गई, बिकॉज आई वॉज गिवन रॉन्ग एजुकेशन. टीम प्लेइंग हमने सीखी नहीं है, टीम के टैंट्रम्स नहीं ले सकता वो, टीम के व्हाट यू कॉल फीडबैक नहीं ले सकता वो, क्योंकि उसको उसके लिए इक्विप्ड ही नहीं है. वो बहुत जरूरी है आपको आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन के थ्रू बच्चों में डालने के लिए. जैसे मैं कहता हूँ ना, इमोशनल स्किल्स एंड सोशल स्किल्स, वेरी इंपॉर्टेंट इज कि आप ये सारी चीजें बच्चों में डालिए. अगर आप आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग की बात करते हैं, टॉपिक्स तो पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है उनमें आप ये स्किल्स डालिए ताकि वो सोशली एक्टिव ह्यूमन बीइंग्स बन जाए. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसी चीज की अगर है 21st सेंचुरी में, हमारे बच्चों को, उनको कोई टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं, वो सब सीख के आए हैं. उनको कोई ऐसी एक्सपर्टीज की जरूरत नहीं, वो सब सीख लेंगे, सारी डांस भी सीख लेंगे, हर चीज सीख लेंगे, लेकिन वो एक चीज नहीं सीखेंगे, और वो नहीं सीखेंगे, कुछ नहीं सीखेंगे, और वो है स्ट्रॉन्ग इमोशनल स्किल्स एंड सोशल स्किल्स. इंटरपर्सनल स्किल्स जरूरी है, बहुत जरूरी है बच्चों को सिखाना, और उसके लिए आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन इज मस्ट. तो अगर हम बात करते हैं, ये देखिए ये वाला जो मल्टीपल इंटेलिजेंस का एक जो चक्र है, जैसे कि अब मैं इसको अभिमन्यु का वो रथ का पहिया कहता हूँ, ये आपने सैकड़ों बार हर किसी वर्कशॉप में यू मस्ट हैव सीन दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स. सो हर चीज में आर्ट दिख रही है. अगर आप फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग जानते हैं, बचपन से हम लोग जानते हैं, मैथमेटिक्स में एक एक्टिविटी हम हर किसी ने करी है, हर बच्चे ने करी है, हर किसी ने करी है, रोमन नंबर्स को स्टिक्स से लगाना चार्ट पे, सबने करी है.
ये भी एक आर्ट का फॉर्म है। अगर हम हिंदी पढ़ा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, और हिंदी में तो देखिए, हिंदी में आपके ड्रामा, रोल प्ले, डिबेट्स, ये सब पब्लिक स्पीकिंग स्पीकिंग सिखाती हैं और हिंदी की लैंग्वेज स्किल्स भी डेवलप करती हैं। हम लोग पिक्चर राइटिंग करते हैं हिंदी और अंग्रेजी में, ये भी क्या है, दीज आर आर्ट फॉर्म्स, जिसमें आप क्रिएटिव राइटिंग करते हैं, पिक्चर आपको दे दी और आप उससे करवाते हैं। आप लोग रोल प्लेस करते हैं, आप लोग नाटक करते हैं, आप लोग ड्रामास करते हैं, आप लोग बहुत सारी चीजें करते हैं। हमको क्या करना है, हम लोग करते सब कुछ है, वी डू एवरीथिंग इन आवर क्लासरूम्स। ऑल वी नीड टू मेक दैट फॉर्मल बाय डिसाइडिंग इट प्रायर कि हमको किस टॉपिक को आर्ट एजुकेशन से पढ़ाना है। जब वो लिस्ट आपके पास होगी ना, तो आप देखिएगा, आप भले 10 टॉपिक साल भर में पढ़ाएंगे और उन 10 टॉपिक्स को अगर आप पहले से प्रिपेयर करके पढ़ाएंगे, बिलीव मी, इट विल डू वंडर्स, इट विल डू वंडर्स। मैं सबसे एक चीज कहता हूँ, हर वर्कशॉप में मेरी एक बात होती है, हम लोग 150 मिनट 150 दिन क्लास पढ़ाते हैं। 150 में से 40 मिनट का अगर हम एक पीरियड लें तो ऑलमोस्ट 6000 मिनट हम लोग साल भर में टीचिंग करते हैं, क्लास में जाते हैं 6000 मिनट। अगर 40 मिनट का एक पीरियड एवरेज पकड़ें और 150 पीरियड्स हम लोग लेते हैं, सो वी हैव 6000 मिनट्स इन अ ईयर। If you take that, I want 15 minutes in a month, and we take classes for 10 months. So I need 150 minutes in a year out of your 6000 minutes, जहां पर ये आर्ट इंटीग्रेशन की आप बात कर सकते हैं, जहां पर आप उनसे सब्जेक्ट के अलहदा कुछ बात कर सकते हैं आर्ट के थ्रू, चाहे विजुअल हो, चाहे ऑडिटरी हो, जो भी आप चाहें। और वो जो 150 मिनट आप बिताएंगे उन बच्चों के साथ, इफ यू स्पेंड दोस 150 मिनट्स विद योर चिल्ड्रन एवरी ईयर, बिलीव मी, दोस 150 मिनट्स will make your 5850 minutes more effective and useful, and you'll have a better connection with your children. So अगर हम बात करते हैं frequently asked questions, जैसे अगर हम बात करते हैं कि क्या है आर्ट के फॉर्म्स, विजुअल में तो आप जानते हैं पेंटिंग है, फोटोग्राफी है, प्रिंट मेकिंग है, ये सारे तो चलिए आर्ट क्राफ्ट का हो गया। परफॉर्मिंग आर्ट्स में डांस, म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, थिएटर, पपेट्री, स्टोरी टेलिंग, मार्शल आर्ट्स, मैजिक परफॉर्मेंसेस, जो जो हम कर सकते हैं। अगर हम आर्ट की बात करते हैं, सोशल स्किल्स की बात करते हैं, और कुछ अच्छे व्हेन यू टॉक अबाउट गिविंग देम दोस 15 मिनट्स इन अ मंथ, उसमें आप ये सब चीजें तो कराइए, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर आप करना चाहें अपने स्कूल में, अपने क्लासरूम्स में, एक स्टोरी टेलिंग का भी शेड्यूलिंग करिए। I think the screen is not shared. Just give me a minute. स्टोरी टेलिंग की एक आदत डालिए अपनी क्लास में, क्योंकि सबसे लीस्ट कॉस्ट इफेक्टिव चीज जो है, सबसे कॉस्ट इफेक्टिव, सबसे लीस्ट रिसोर्स इंसेंटिव चीज कोई है तो वो स्टोरी टेलिंग है, जहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको थॉट चाहिए और आप बच्चों को बोलिए। और उस स्टोरी टेलिंग में किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, मैंने एक सेशन लिया फॉर स्टोरी टेलिंग इन क्लासरूम। समबडी आस्क्ड, सर केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ मैं, स्टोरी टेलिंग का से क्या करेंगे आप केमिस्ट्री में? मैंने कहा मैम स्टोरी टेलिंग से बहुत कुछ हो जाएगा केमिस्ट्री में। बोले कैसे? मैंने कहा रदरफोर्ड मॉडल, डाल्टन्स मॉडल और जाने क्या क्या मॉडल्स पढ़ाते हैं केमिस्ट्री में। मुझे केमिस्ट्री से बहुत घबराहट होती है, क्योंकि मैंने पढ़ी तो बहुत है, लेकिन अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। मैंने कहा जब आप ये सारे मॉडल्स पढ़ा रहे हैं और बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं इन सारी चीजों की टेक्निकलिटीज के बारे में, अगर आप छोटी छोटी स्टोरीज इन साइंटिस्ट के बारे में बताना शुरू कर देंगे, तो मुझे लगता है ऐसा
कि जिसका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पा रहा है ड्यू टू वॉट एवर रीजन इन द सब्जेक्ट, you may be successful in creating or developing the interest of that particular child in the subject. तो स्टोरी टेलिंग एक बहुत आसान, बहुत सस्ता और बहुत टिकाऊ तरीका है आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग का, which is very effective when we talk about से हम कहते हैं ना, जैसे when we talk about implementing art education, art integrated learning. What is the difference between art education and art integration जिसे हम बात करते हैं? Art education is the process that encourages sensory exploration. It provides a platform to work with ideas and materials to create expression which might not be expressed by words alone. Art education एक बड़ा वास्ट तरीका है जिसमें हमारा मेन ऑब्जेक्टिव बच्चों को आर्ट सिखाना है, बच्चों को कला सिखाना है. बट when we talk about art integrated learning, center of the curriculum में जो बात करते हैं ना, आर्ट्स हैं हमारे सेंटर ऑफ करिकुलम में, बट अल्टीमेटली हमको सब्जेक्ट सिखाना है. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आर्ट एजुकेशन एंड आर्ट इंटीग्रेशन. आर्ट एजुकेशन में क्या है कि हमको आर्ट सिखानी है, उनको पेंटिंग सिखानी है, हमको कोई ऐसी चीज सिखानी है जो अलग है. बट आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग की अगर हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग, देन वी हैव टू कीप आर्ट एट द सेंटर, बट द अल्टीमेट एम of the teacher is how to make the concept easier to grasp and the topic interesting. That's the difference between art integrated learning and art education. तो उतना ही कराइए. देखिए अब क्या होता है, मैं आपको एक चीज बता दूं, I am not an art person. मतलब मुझे अगर आप आर्ट एंड क्राफ्ट का काम देंगे, सबसे पहले तो दिमाग से ये निकाल दीजिए कि आर्ट एंड क्राफ्ट जो है वही आर्ट एजुकेशन. हर चीज आर्ट है जो आपके नॉर्मल कन्वेंशनल प्रोसेस का हिस्सा नहीं. हर चीज आर्ट है. बोलना भी आर्ट है, सुनना भी आर्ट है, एक्सप्रेशंस भी आर्ट है. सो यू नीड टू फाइंड आउट कि हमको क्या यूज करना है. तो जो बच्चा, फॉर एग्जाम्पल, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, मेरे को ज्यादा आर्ट क्राफ्ट की चीजें समझ में नहीं आती, बट आई थिंक आई कैन स्पीक वेल, आई कैन टॉक वेल, ऐसे बच्चे आपकी क्लास में बहुत होते हैं. तो डिफरेंशिएटेड आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग की जरूरत है. आप एक ही तरीके की आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग सब पे नहीं थोप सकते. यू कैन नॉट गिव ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास टू मेक अ मॉडल, बिकॉज सम मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन मेकिंग अ मॉडल. Some may be interested in making a documentary. So you need to identify the interest of your students. Based on the interest and in relation to the topic, you give them the task. For example, आप water harvesting पढ़ा रहे हैं साइंस में, और आपने इंटरेस्ट देखा बच्चों का कि कुछ लोग मॉडल बनाने में इंटरेस्टेड हैं, कुछ लोग डॉक्यूमेंट्री बनाने में इंटरेस्टेड हैं, कुछ लोग वीडियो बनाने में इंटरेस्टेड हैं. डिवाइड the task. जो लोग जो पसंद करते हैं उनको वो काम दीजिए. That will be real integrated learning with differentiation. So ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है कि लर्निंग प्रोसेस को कैसे होलिस्टिक बनाया जाता है. ये बेसिकली बिकॉज इट गिव्स देम टाइम टू थिंक, इट गिव्स देम सम एक्स्ट्रा स्कोप. Because when you are engaged in your normal activities, आप आए लेक्चर दिया पढ़ाया, आप आए लेक्चर दिया पढ़ाया, मोनोटोनस एक रॉट लर्निंग हो जाती है, मोनोटोनस तरीका हो जाता है, एंड इंटरेस्ट गोज डाउन. तब आप आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग को यूज करेंगे. बट मेक श्योर, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट डूइंग AIL or when you start implementing AIL in your classrooms, very important for the teacher is to have the class control. जैसे कहते हैं ना बच्चे सर पे चढ़ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल, वो चीज नहीं होनी चाहिए. यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक, कितना छोड़ना है, कितना पकड़ना है, कहाँ छोड़ना है, कहाँ पकड़ना है. क्योंकि अगर आपने इसको ढंग से प्लानिंग के साथ इंप्लीमेंट नहीं किया, if you don't make proper planning and implement your this stuff, believe me, आपकी जिंदगी का सबसे
बेकार डिसीजन होगा। सो ये बहुत जरूरी है कि आप क्या करना है और क्या नहीं करना है उसके बीच में डिफरेंस रखें। आर्ट टीचर का क्या रोल है, ये आर्ट टीचर बहुत बेहतर जानते हैं कि बच्चों को फैसिलिटेट करना है इनको। दिस नीड टू एक्ट एज ए फैसिलिटेटर। आर्ट टीचर, सारे सब्जेक्ट टीचर्स उनसे आइडिया ले सकते हैं। अब मैं बताऊं कैसे। आपको कोई सब्जेक्ट पढ़ाना है, फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स पढ़ाना है, एंड यू वांट टू any topic that you want to teach them, you need certain art activity to be implemented. Sit with your art teacher, discuss with the art teacher, give your requirements, take his or her suggestions, and then implement it. Don't just do like this, because mathematics and art are different things. So how you have to give them specific requirement, and then art teacher will come up with a proper solution depending on the topic that you're teaching and what is your need. So अगर हम इसकी बात करें, how to design an art integrated lesson, examine art standards and non-art subject standards to determine which standards appear to work together naturally. जिसको हम लोग बात करते हैं ना, इसको अगर मैं हिंदी में बात करूं तो you need to basically find out which topics that you can teach using art integrated learning. To ensure rigor, pull out the standards identified for the use in art integrated lesson. That is again a planning part. Then what final outcome you want to determine, what final outcome you want. So you need to determine final student outcome for demonstration of learning and design a rubric for the final outcome कि आप क्या चाहते हैं. And then design a lesson considering final outcome, rubrics and standard, and obviously you need to revise it. So the first and foremost very important thing is you need to identify the topics which you need to teach through art integrated learning. अगर आपका सिलेक्शन गलत हो गया तो आपका पूरा पिरामिड धराशायी हो जाएगा. You need to find out, make a proper list of the topics. Very important. So अगर हम असेसमेंट की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग की असेसमेंट जो है वो बड़ी नॉन जजमेंटल और नॉन कॉम्पिटिटिव है, क्योंकि इसमें सही और गलत नहीं होता. ये एक ऐसी चीज है कि आप टाइम टू टाइम उसको चेक करते रहेंगे कि क्या आपको मिल रहा है, कहाँ आप पहुंचे हैं, कितना आपने समझाया है चीजों को और कितना उन्होंने समझा है. वो डिपेंड करता है कि आप समझाना क्या चाह रहे थे और वो समझना क्या चाह रहे हैं. So it can be verbal, non-verbal, it can be tangible, intangible. It all depends upon what activity that you are engaging your students in. But very important for you is assessment can only be done if you have in your mind that this is the final outcome that the student should understand. अगर आप मैथमेटिक्स में आर्ट पढ़ा रहे हैं तो फाइनल आउटकम तो असेसमेंट का वही रहेगा, सब्जेक्ट का वो पर्टिकुलर टॉपिक जो आउटकम होना चाहिए. असेसमेंट दो तरीके से होगा. क्या प्रोसेस उन्होंने अप्लाई किया, हर स्टेज में कितना उन्होंने अपना इनपुट दिया, how much effort they have put in the process of doing that particular project that you have assigned to them. But the ultimate assessment would be based on the outcome. So if you do assessment for AIL, always make sure that you have a small viva at the end of the session. 5 बच्चों को आप टारगेट देते हैं कोई टॉपिक बनाने का, कोई प्रोजेक्ट बनाने का, उसमें से आप एक चीज समझ लीजिए कि 3 बच्चे काम करते हैं या 2 बच्चे काम करते हैं, 3 नहीं करते. उसमें से एक बच्चे का मतलब क्या होता है, वो पैसे दे देगा, कितने प्रोजेक्ट में पैसे लगने हैं वो पैसे दे देगा और उसकी तीसरी हो जाएगी. उसमें से एक बच्चे का काम होता है कि वो कितना मटेरियल को प्रोक्योर कर लेगा, इधर उधर भागा दौड़ी कर लेगा और आपको लाके दे देगा. और 2 या 3 बच्चे ऐसे होते हैं जो एक्चुअल उसमें मेहनत करते हैं. तो ऐसा हर जगह होता है और ऐसा हर जगह होता रहेगा. लेकिन जिन्होंने पैसे दिए हैं, जिन्होंने वो नेसेसरी अरेंजमेंट्स किए हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में. सो मेक श्योर व्हेनेवर यू आर असेसिंग, assigning a project to your students,
irrespective of the class, make sure you have a viva of few minutes at the end of the, in the assessment process, और हर किसी से ये पूछिए कि तुम्हारा रोल क्या है, and then you judge them, and then you mark them or grade them or whatever you do. Don't just do it on the basis of कि अच्छा मॉडल बन गया फाइनल, ना ना ना, कैसे बना, क्या किया, एक शॉर्ट डिस्कशन आपका होना चाहिए. So this is what art, जैसे कहते हैं ना कि आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग क्या होती है और कैसे होनी चाहिए, छोटा सा नटशेल का आइडिया दिया है मैंने. सही गलत कुछ नहीं है. अगर हम बात करें कि टूल्स एंड टेक्निक्स फॉर एआई बेस्ड असेसमेंट, एनी आर्ट एक्टिविटीज इंक्लूडिंग ड्राइंग, पेंटिंग, सिंगिंग, रोल प्लेज, एनीथिंग, portfolios of sample finished works, even unfinished artworks, personal notes on of facilitator on students, subject specific learning progression, inclination toward different art forms, strengths and challenges, special talents, skills of students, etc. So you need to have learning progression. Learning progression की हम लोग बात जो करते हैं, subject specific learning progression बहुत important है. Descriptive and anecdotal recordings, reporting of overall progress of children's cognitive and socio-emotional creative development. Very important. जो हम लोग anecdotal records हम लोग जो रखते हैं बहुत जरूरी है. Obviously, you have displays and exhibits in classroom and corridors by students, and stories, poetries, letters, posters, all that we do, and obviously project works done in the group. एक चीज और add कर लीजिए, anything that you give, please make sure that you have a small discussion with the student at the end of the task. So this is what AIL is all about. I think Himani ma'am, we can take some questions now, because this is what art integrated learning is all about. And ऐसे तो बहुत endless चीजें हैं, but nutshell की अगर हम लोग बात करें तो यही है सब. Thank you, Anurag sir. Anurag sir, at the beginning we had a few questions in the chat box. जो towards the end लिखा गया that answered, already Okay. answered. Thanks. तो बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन जैसे था, फॉर एग्जांपल कि हम लोग ये कर रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है, बट किस तरह की एक्टिविटीज ले सकते हैं, तो वो टुवर्ड्स द एंड यू पिक देम अप कि कैसे ले सकते हैं. एंड कुछ क्वेश्चंस थे कि हम आर्ट टीचर की इन्वॉल्वमेंट कैसे होगी, वो भी आपने लिया कि आर्ट टीचर के साथ कोलैबोरेट करके काम कीजिए. एंड आई एग्री विद यू कि कोलैबोरेटिव एफर्ट इज नीडेड. हम कहें कि स्टैंड अलोन टुडे, इफ आई से आई एम अ साइंस टीचर एंड स्टैंड अलोन आई कैन टीच एवरीथिंग. NEP का idea is collaborative work with different teams. And I also appreciate the fact कि normally हम हमेशा कहते हैं for every question there's a what, why and how, right? But I personally feel कि जब why clear हो जाता है ना, तो what or how automatically clear हो जाता है. And you began with the why. That why art integration, why are we doing it, what are the benefits. And एक चीज और which I would like to re-emphasize, जो कुछ indirect questions थे but you beautifully covered, कि multiple intelligences. आर्ट इंटीग्रेशन का एडवांटेज ही ये है कि हम लोग इसमें मल्टीपल इंटेलिजेंसीज कवर कर सकते हैं. मैं एक चीज यहाँ पे ऐड करूंगा, मल्टीपल इंटेलिजेंस की हम बात करिए, सब्जेक्ट टीचर्स की बात करी, बहुत कम स्कूल्स में, मैं बिल्कुल स्पेसिफिकली कह रहा हूँ, बहुत कम स्कूल्स में सारे सब्जेक्ट टीचर्स एक साथ बैठ के कभी कोई एक्टिविटी डिजाइन करते हैं. ठीक है, मैथ्स वाले साथ बैठ जाएंगे, हिंदी वाले साथ बैठ जाएंगे, लेकिन मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस और संस्कृत सब मिलके एक्टिविटी डिजाइन नहीं करते हैं. तो ये प्रैक्टिस शुरू करिए सब लोग मिलके, और फिर आप जब ये प्रैक्टिस शुरू करेंगे ना, तो भले साल भर में 2 प्रोजेक्ट्स होंगे, ऐसे ज्यादा नहीं हो सकते. आप सोचो कि हर महीने करेंगे, हर हफ्ते करेंगे, नहीं, इम्पॉसिबल है. हो सकता है साल भर में एक ही प्रोजेक्ट हो ऐसा पूरे स्कूल का, पूरी हर क्लास का, बट वो प्रोजेक्ट एक करवाइए. और जब आप वो प्रोजेक्ट करवाएंगे तो ये जितनी भी मैंने 1 घंटे में जो मैंने बोला है, वो सब उसमें दैट विल बी एम्बेडेड इन इट. राइट. So that will help. लोग मल्टीपल इंटेलिजेंसीज के साथ सर करवाते हैं तो डिफरेंशियल क्लासरूम, मतलब ये सब फैंसी वर्ड्स एंड वी फील दैट बिग terms being used here and there,
But actually, when you come down to it, so one single method, one effort, and all of these, it comes again together like a circle. एक cycle की तरह complete हो जाता है. Differential classroom handling, multiple intelligences cover करना, subject integration cover करना, art integration. It all helps and happens together, and very beautifully, I think, explained by you and put in a very systematic order. And one thing I always appreciate about Anurag sir is that a very logical approach to things. हम लोग we don't talk, he doesn't talk like a resource, he talks with logic कि ऐसा है ऐसा ही होना चाहिए, which makes I think things easier. And I'm sure all my educators who've connected with us today agree with me कि लगता है कि ये तो आसान है, ये इतना डिफिकल्ट नहीं था. बहुत आसान है. एक चीज सब लोग अपने टीचिंग लर्निंग का पार्ट अगर बना सकें तो इट विल बी वेरी इफेक्टिव. एंड जिससे मैंने कहा ना, स्टोरी टेलिंग एक आर्ट का फॉर्म है, और स्टोरी टेलिंग को अपने टीचिंग लर्निंग का पार्ट बना लीजिए. और जब आपने स्टोरी टेलिंग को अपने टीचिंग लर्निंग का पार्ट बनाया, स्टोरी क्रिएट कर लीजिए. कोई पता करने नहीं जा रहा आपकी स्टोरी सच्ची है झूठी है. बिल्कुल. क्रिएट अ स्टोरी एंड दैट्स अ गुड फॉर्म ऑफ आर्ट. वो करिए. एंड स्टोरी के लिए तो एक चीज हमेशा याद रखिए, हमारी जो फेबल्स थी उसमें एनिमल्स यूज्ड टू टॉक, ट्रीज बात करते थे, नॉन लिविंग थिंग्स बातें करते थे. कार्टून्स में हर कोई बात करता है, तो एवरीबडी इज टॉकिंग. तो स्टोरी कैन बी एनीथिंग. द टेबल इज टॉकिंग टू द चेयर. anything you can make up a story or anything. जो भी मन करे स्टोरी बनाइए, बच्चों को प्रेजेंट करिए, but that story should have a lesson at the end of the series. कोई ना कोई मॉरल उस 2-3-4 मिनट की जो भी हम बात कर रहे हैं, there has to be a substance in it, number one, and there has to be some moral, कि एक सीख निकल के आए आपके उस 3-4-5 मिनट की जो भी आप बात करना चाह रहे हैं, उसमें there has to be some learning should be there. So that's learning all outcome about should be there. every So if you want to talk specific learning outcome. स्पेसिफिक, जैसे आप कह रहे थे कि हम पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं, तो समथिंग रिलेटेड टू दैट कुछ उसमें से निकल के आ जाए. बिल्कुल आ जाएगा. और बतेरी, आप जब गूगल को सर्च करेंगे, यू विल गेट एंडलेस स्टोरीज, एंडलेस. बस आपको ये देखना है कि कब मौका मिले और आप सुना दो. कम. Beautifully done, Anurag sir. Amazing session. I think this was one of those sessions जहां से हम लोग आंख नहीं उठा पा रहे थे या हट नहीं पा रहे थे कि कुछ मिस ना हो जाए बीच में सुनते सुनते. My pleasure. A wonderful session, and thank you all the educators for joining with us today. And on behalf of Madhuban Educational Books and the entire team, I would like to thank you, sir, for taking out valuable time on a holiday for all of us and giving us such a sorted session and such a well-explained session. Thank you so much, sir. It's been a pleasure having you on the session with us. My pleasure too, ma'am. My pleasure too. Thank you. Thank you, everybody. Have a very good weekend and enjoy a nice cup of tea and coffee right now. Thank you. Thanks a lot, ma'am. Thank you.